Hello class 12th. Today I am going to continue with this chapter, that is biotechnology and its application, chapter number 14 as you know, and now today's topic is the production of transgenic crop resistant to biotic stress. In previous video we studied about the production of the transgenic crop resistant to abiotic stresses like cold resistant crop, salt resistant crop, drought resistant crop and heat resistant crop. Now today we will discuss about the abiotic stresses. Okay, abiotic stress like insect resistant, pest resistant. Okay, and now first one, production of the transgenic crops resistant to biotic stress. Biotic component harm the plant in various ways. They feed on plant, compete for food and space, thus decreasing the plant productivity. To overcome this, genetically engineered crops are used. Some of them like insect resistant crop. पहला इस बायोटिक स्ट्रेस में हम क्या लेंगे कि हमारा जो क्रॉप इंसेक्ट खराब करते हैं हम उससे रेजिस्टेंट करें अपनी क्रॉप को. ओके, फर्स्ट वन इज insect resistant crops. Insect resistant crops like Bt toxin. Bt toxin discussed in previous video, in previous chapter also, chapter number 13, Bacillus thuringiensis. Okay, Bt toxin is produced by the bacterium and expressed in plant to provide resistance to insect. Understand it? Bt toxin is released by the bacteria. ठीक है, ये एक बैक्टीरिया रिलीज करता है. द नेम इज बैसिलस thuringiensis. Bacillus thuringiensis. B for the bacillus, T represent this thuringiensis species. ठीक है, this bacteria produced by the bacteria and expressed in plant to provide resistance to insect. In effect created a biopesticide. ठीक है, जो इसका एक बैक्टीरिया इज एक्ट एज अ बायोपेस्टिसाइड हेयर, दैट इज बैसिलस thuringiensis एक्ट एज अ बायोपेस्टिसाइड, यानी हमारी क्रॉप को बचा रहा है अगेंस्ट द इंसेक्ट बाय रिलीजिंग दिस टॉक्सिन. हाउ इट वर्क्स? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी क्रॉप्स है हमारे पास? बीटी कॉटन. बीटी रिप्रेजेंट हेयर Bacillus thuringiensis bacteria present in this crop which release a special type of toxin, that is Bt toxin, and which prevent the plant against the insect. And the second is Bt corn. हमने ये बना लिए हैं, ये Bt corn, Bt cotton and golden rice, tomato, potato. Golden rice, tomato, potato and so many. And soybean also included in it. First of all, Bt cotton is created by using some strain of the bacterium Bacillus thuringiensis. As you know, how it protects? This bacterium produces protein. ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है दिस बैक्टीरिया that kills a certain insects such as Lepidopterans and armyworm, coleopterans like beetles and dipterans, flies and mosquito. Bt Bacillus thuringiensis form protein crystal during a particular phase of protein crystal बनाता है. ठीक है, during the particular stage of life cycle, protein crystal. Okay, protein crystal during the particular phase of their growth which contain a toxic insecticidal protein. इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन क्या होती है? जो इंसेक्ट को किल करती है, इज नोन एज क्राई प्रोटीन. CRY, क्राई प्रोटीन. इट इज अ 1 मार्क्स क्वेश्चन. दिस क्राई प्रोटीन, CRY. क्राई प्रोटीन रिलीज बाय द Bacillus thuringiensis bacteria. It is forms a protein crystal during a particular phase of their growth. They contains a toxic insecticidal protein known as cry protein. Bt toxin protein exists as inactive protoxin. ये सब में होती है but is in inactive protoxins. Okay,
inactive protoxins, but once an insect ingests that it is converted into active form. जैसे इंसेक्ट इसको खाता है ना, जैसे इंसेक्ट के अंदर ये जाती है तो नाउ इट्स एक्टिवेट, ओके, एंड फॉर्म अ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट. क्यों एक्टिव हो रही है? इनएक्टिव टू एक्टिव क्यों होती है? ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ गट. ठीक है, इंसेक्ट के अंदर जो गट में एल्कलाइन पीएच होता है तो नाउ इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स को एक्टिव प्रोटॉक्सिन्स में बदल जाता है. एक्टिव टॉक्सिन्स में, नॉट प्रोटॉक्सिन, एक्टिव टॉक्सिन में बदल जाता है. ओके, दिस solubilize the crystals. The activated toxin bind to the surface of the midgut epithelial cell and create spore that cause cell swelling and lysis, leading to the death of an insect. Most Bt toxins are insect group specific. The toxin is coded by the gene name as small. आता है difference. This is small c r y. Cry. This is a gene. Small c r y is a gene and capital C R Y is a protein. This is the basic difference between this cry and this cry. Okay. If it is capital C, so now it's protein. If it is small c, so now it's gene. Okay. Now the protein encoded by the gene cry IAC and cry second AB control the cotton bollworm and cry first AB controls the corn borer. Now next one, that is pest resistant crop. This is insect resistant. Now second one, that is pest resistant. Second one, pest resistant crops. Pest resistant crops are nematode. Understand with this name. Nematode क्या है? Plant nematode है Miladogynine. Miladogynine is a plant nematode. वैसे नॉर्मल nematode आपके क्या होते हैं? स्कैरिस वगैरह होते हैं जो एनिमल nematode होते हैं. बट Miladogynine is a plant. It is a plant nematode. ओके, इकोग्नेटा. इसका स्पीशीज क्या है? इकोग्नेटा. इनकॉग्नेटा. Incognita. Okay, infects the root of tobacco plant which reduce the production of tobacco. ठीक है, जो मिलेडोगाइनिक इग्नेटा है ये क्या करती है? जो टोबैको प्लांट्स होता है उसकी रूट को अफेक्ट करती है जिसकी वजह से प्लांट डाई कर जाता है